playoff times in IPL 2021, and we moved to Sharjah to go to an eliminator game between Royal Challengers Bangalore, who are pinned to probably lift the cup, versus KKR, who are on absolute roll. And news coming in from Sharjah, Sanjay, welcome back. Virat Kohli won the toss, which is a big surprise. And guess what? He's chosen to bat. Any concerns? Any reactions? जनरली क्या होता है, विराट कोहली एक तो टॉस जीतते नहीं है और जीतते हैं तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो होपफुली इस बार ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने बैटिंग करने का जो फैसला लिया वो बुरा साबित हो। बिकॉज आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा, उन्होंने बॉलिंग लिया, वो नहीं चला। देन वर्ल्ड टीस काफी जगह बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसा होता है। तो आई वाज होपिंग कि वो टॉस हार जाते, बट उनको यही करना पड़ता बिकॉज मॉर्गन वाज सेइंग दैट दे वुड हैव लव टू बोल फर्स्ट, कंसिडरिंग what happened in the previous encounter between them। और जहां से केकेआर का पूरा जो ग्राफ है ऊपर चलता रहा, 92 पे ऑल आउट हो गई थी आरसीबी एंड दे चेज्ड इन 10 ओवर्स और सो। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। शारजा डिफिकल्ट विकेट डेफिनेटली है इस बार। अगर अच्छा बैटिंग हुआ तभी भी आई थिंक इट माइट बी इजियर टू चेज विद ड्यू अराउंड, बट हु नोस, व्हाटएवर दे डिड दे वुड हैव टू डू वेल। आपको क्या लगता है सुमन? मुझे लगता है अच्छा डिसीजन है आरसीबी बैटिंग फर्स्ट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया बिकॉज दे हैव द बैटिंग पावर टू पुट 200 फॉर एग्जांपल if they put 200 runs on a board on an eliminator game pressure will get to KKR. And second aspect of it is if RCB were to bowl first with their bowling track record, it would have been easily, again, KKR would have probably put in 80, 180 plus, and pressure on RCB with three or four key players going. They can't rely on Maxwell forever. I mean, hopefully he comes through, but I feel that RCB has done right thing by batting first, and hopefully it's a high scoring game, which is what will drive the eliminator. आपने 200 कहा। 200 जो था पहले लेग के, जो इस टूर्नामेंट की जो इंडिया लेग में पहला जो था इनका एनकाउंटर, उसमें 204 बनाए थे। आई थिंक 200 समथिंग, एंड बोथ डिविलियर्स एंड मैक्सवेल गॉट 50 ऑड, ऑल्दो देयर वाजंट मच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टॉप 3। तो वैसा हो गया तो आई थिंक बहुत ही धमाकेदार होगा। बट आई एम होपिंग कि ये 150 160 के ऊपर बने, वरना मतलब पिछली बार जैसा ना हो। तो आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ हो। Hopefully. And KKR has not lost a single game chasing in UAE. Did RCB miss the trick? Is the question coming from social media. But again, we will see. On a knockout game, batting first, history speaks and suggests that you are well placed. What about playing 11? Surprised again that RCB is going unchanged, but it's a good surprise. हाँ, कंसिडरिंग जो पिछला मैच इन्होंने जीता, आई वाज़ थिंकिंग क्या ये लोग चेंज चेंज कर सकते थे। होपफुली ये लोग बैटिंग लाइनअप चेंज नहीं करेंगे इस बार। डैन क्रिश्चियन का जो भी इनका एक्सपेरिमेंट रहा है नंबर 3 का, वो नहीं चला है। बट पिछली बार चेस करते हुए 7 विकेट हाथ में रहते हुए ये लोग लास्ट बॉल तक ले गए थे गेम। तो इस बार ओपनिंग इनकी होपफुली अच्छी चलेगी। देवदत्त पडिक्कल और कोहली दोनों ने कुछ खास किया नहीं है इस टूर्नामेंट में सो फार। देयर मेन core of the team is what would Maxwell and De Villiers basically does। बॉलिंग में थोड़ा बहुत कंसर्न है, सिराज उतने अच्छे दिखे नहीं है, बट हर्षल पटेल ने अच्छी बॉलिंग की है और शायद ऐसे विकेट में उनको अच्छी मदद मिलने की भी चांसेस है। 30 विकेट पे हैं, अगर 2-3 विकेट ले लेते हैं वो इस प्लेऑफ्स के दौरान, तो he'll be the highest wicket taker ever in a season। 32 विकेट का रिकॉर्ड है ड्वेन ब्रावो का। Hmm. अनचेंज साइड व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। काफी बारी कोहली करते हैं कि ये चेंज करते हैं यहाँ वहाँ कुछ कुछ, बट दिस लुक्स रिलेटिवली सेटल्ड। सो देखते हैं क्या। आपको क्या लगता है, कुछ चेंज एक्सपेक्टेड था? नहीं, कोहली को जानते हुए probably he would have thought about changing, one of the players, but I don't know who he would have. Dan Christian, he would have probably brought in, but it would have been unfair dropping anybody from the previous playing 11. And from KKR perspective, there was a huge speculation that Shakib will sit and Dre Russ will come in. But again, looks like Shakib is going due to the nature of the pitch. He can bat and bowl. I know Dre Russ can take the game away, but I mean, it's a chance. And Shakib is a well-established all-rounder. So I wouldn't have expected much of changes unless somebody radically was trying to take a gamble. And Lockie Ferguson looks like is going to be the key player if he gets going with his pace, and Shakib Al Hasan, and things are going to look interesting with Sunil Narayan also in the group. क्या लगता है? What is the prediction of RCB score?
I'm I don't know, I'm gonna go low ball probably. मुझे लगता है 150 नहीं बनेगा इनका इस बार. I think this will be a slow low. अगर the very fact they've picked Shakib, they probably know that this is a slow low wicket. Hopefully थोड़ा अच्छा wicket होगा. But slow wicket में भी score set करना बहुत मुश्किल है. और चेस करना शायद रिलेटिवली इजी हो अगर आपको पता है 6-7 रन के एवरेज से जाना है. बट इनके पास है खिलाड़ी, मैक्सवेल हैं, डिविलियर्स हैं, जो पिच कोई भी हो, अगर इनका बल्ला चल गया तो ये अच्छे-अच्छे बॉलर्स की धज्जियां उड़ा सकते हैं. और विराट कोहली जो ओवरड्यू है, लॉन्ग ओवरड्यू फॉर अ मीनिंगफुल नॉक इन द आईपीएल. तो मुझे लगता है अगर वो भी चल गए तो इतना क्लास है उनमें कि वो भी अच्छा खासा रन बना सकते हैं. बट आई डोंट नो, आपको क्या लगता है सुमित? 160, 170 will be कल की तरह will be a decent chaseable. I'd be disappointed 150 के below हुआ है score, not just because it's RCB batting, but it's an eliminator. We need a close one. We need a high scoring game. So my thought goes between 160 to 170. That should be a good competitive score, and anything over 170 will be match winning. But KKR have the bowling, and Shubdeep, who also supports KKR, comes from left wing again and says, "What about Harbhajan playing today? Could he have fitted in today?" नहीं, Thoughts? उनको उनको सेकंड लेग में तो कुछ खिलाया नहीं है, ऑल्दो ही विल डू अ जॉब. उनको किसी भी टीम में आप कहीं भी फिट करें, वो ही विल डू अ जॉब. और इंडियन है तो ऐसा भी नहीं कि कोई फॉरेन प्लेयर का वो जगह ब्लॉक करेंगे. बट टीम चल रही है अच्छी. सेकंड लेग में उन्होंने बहुत अच्छा, आई थिंक 8 में से कुछ 5 या 6 गेम ये जीते हैं, तो एकदम इन फॉर्म टीम है आउट ऑफ ऑल दी अदर्स आई थिंक. तो मुझे लगता है कोई चेंज की गुंजाइश नहीं थी. आई थिंक शाकिब विल बी ए गुड एडिशन, बल्लेबाजी भी अच्छी करेंगे. और वरुण चक्रवर्ती विल बी द थ्रेट फैक्टर, बिकॉज इन्होंने 3 विकेट भी लिए थे जब 92 पे ऑल आउट हुई थी पिछली बार आरसीबी टीम. तो मुझे लगता है कि केकेआर का थोड़ा पलड़ा भारी है. दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज देव गॉट 3 प्रॉपर वेरी गुड स्पिनर्स. और यहाँ इनके पास सिर्फ चहल है, ऑल्दो शाहबाज अदीम अहमद भी अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं. बट मुझे थोड़ा इनका आरसीबी का बॉलिंग हल्का लग रहा है कंपेयर्ड टू केकेआर. आपको क्या लगता है सुमन? 10 minutes away game, exciting है. Now that the toss is behind us, Virat Kohli has won the toss and batting first. Now it's all up to the players, right? हम लोग कितना भी analysis कर सकते हैं, preview कर सकते हैं, but now it's up to those 11 players to go onto the field. And all of RCB fans will be desperately looking for a really, really good game. Hopefully, RCB fans are not disappointed tonight. Hopefully, KKR fans, I mean, one of the team is going to be disappointed, but we will see who's the better team. And I, unfortunately, this is eliminator, so whoever yeah, loses gets back in. Whoever हाँ wins, इसमें DC is waiting for him. और केकेआर तो 2 बार जीती है. आरसीबी के लिए काफी इमोशनल होगा अगर ये बाहर चले जाते हैं, बिकॉज विराट कोहली का ये आखिरी गेम होगा अगर वो आउट होते हैं. दे वुड वांट देम टू एटलीस्ट रीच द फाइनल्स, और फाइनल में देखते हैं फिर क्या होगा. बट वेयर सीएसके इज वेटिंग, काफी काफी अपहिल टास्क है. सो वन गेम एट अ टाइम फॉर ऑल द आरसीबी फैंस, बिकॉज हमारे ग्रुप में मैक्सिमम आरसीबी फैंस है. तो आई एम रियली होपिंग कि they win and have a good game with DC. Then you at least will have one of the teams which haven't won it prior going into the finals. Yeah, all the best to both the teams. Big match players are there on both sides of the spectrum. So hopefully somebody comes through, some youngsters comes through and take the game away. I don't know, lots of exciting stuff coming in, and we are in for a 40 over good game. And if it is super over, we'll be happy, but we will see. At the end of the day, we will see you back again. If not for mid innings, by end of the day review for sure, we will be back reviewing the game. Enjoy, and RCB fans, all the best. KKR fans, all the best. Sanjay, hopefully Virat Kohli picks up the cup for your Yes, season. let's see. All right. Have a good one, guys. Thank you.